explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 13th of grammar, and the name of the chapter is tenses of verb, right? So हम बात करने वाले हैं verb के tenses के बारे में इस chapter में. So let's begin. Tense is the verb which tells the time of the action or the happening. कि tense एक ऐसा verb है जो हमें किसी भी action के time के बारे में बताता है, यानी कि वो action कब perform किया गया, right? There are 3 types of tenses. कि total 3 तरीके के tenses होते हैं, present, past and future, right? Present tense tells us that the action is taking place now at the time of speaking. कि present tense हमें बताता है कि जो action है वो actually अभी perform किया जा रहा है, यानी जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं at the time of speaking. Correct? जैसे कि example है I eat food every day. Right? Next. Past tense tells us that the action had been taken place earlier. Past tense हमें बताता है कि जो action है वो पहले समय में किया जा चुका है, right? Before the time of speaking, यानी कि जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले हम वो action already perform कर चुके हैं. Example, I ate food. Next we have future tense tells us that the action will take place in the time to come. Future tense हमें बताता है कि कोई भी action जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम आने वाले समय में perform करेंगे, right? Example, I will eat food in the afternoon. Right? Next, now we have verb in simple tense. तो अब verbs को हम simple tense में देखते हैं. The verb in its base form is considered to be in the present tense. कि verb जब अपने base form में होती है तो उसे उसके present tense में consider किया जाता है. The base form of the verb is modified to take the verb to past and future tense. कि जो base form है verb का वो modify किया जाता है verbs को past या फिर future tense में convert करने के लिए, right? So let's see how we can do it. So it is being said over here that some verbs form their past by adding D or ED to the present tense. कि कुछ verbs उनके past tense में convert की जाती हैं जब हम उनमें D या फिर ED को present tense में add on करते हैं. They form their future tense simply by placing shall or will before the verbs as follows. कि ये इनका future tense बनाते हैं simply by placing shall या will, उनसे पहले shall या will लगाकर, right? So यहाँ पर कुछ examples हमें दिए गए हैं. So it is talk, talked, will or shall talk. Work, worked, will or shall work. Play, played, will or shall play. Love, loved, will or shall love. Right? Next, it is some verbs form their past tense by adding T to the present tense, and for future form will or shall is added. कि कुछ verbs अपना past tense बनाते हैं T add करके उनके present tense में,
और फ्यूचर फॉर्म बनाया जाता है विल और शैल को ऐड ऑन करके. सो इट सेज लर्न, learned, will or shall learn. Spend, spent, will or shall spend. Smell, smelt, will or shall smell. Lose, lost, will or shall lose. Some verbs are entirely different in their past tense. कि कुछ verbs अपने past tense में बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं. The future tense is formed by adding shall or will before the verbs expressing strong will or determination as follows. Right? कि जो फ्यूचर टेंस है उसमें हम शैल या विल ऐड कर देते हैं वर्ब से पहले, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग विल या फिर डिटर्मिनेशन दिखाती हैं, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, विल और शैल ब्रेक. स्विम, स्वैम, विल और शैल स्विम. स्पीक, स्पोक, will or shall speak. Drink, drank, will or shall drink. Buy, bought, will or shall buy. Steal, stole, will or shall steal. Think, thought, will or shall think. Hear, heard, will or shall hear. Lie, lay, will or shall lie. Leave or left, will or shall leave. Right? Ring, rang, will or shall ring. Ride, rode, will or shall ride. Dig, dug, will or shall dig. Forget, forgot, will or shall forgot. See, saw, ya will, ya shall see. Right? Next, some verbs are the same in their present tense and past tense as follows. कि कुछ वर्ड्स हैं जो अपने प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टेंस में सेम रहती है, उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है. सो इट इज beat, beat, will or shall beat. Cut, cut, will or shall cut. Hit, hit, will or shall hit. Hurt, hurt, will or shall hurt. Shut, shut, will or shall shut. Right? Next we have verbs continuous tenses. तो अब verbs continuous tenses कौन से हैं? Let's find out. Read the following sentences carefully. जल्दी से यहाँ पर जो sentences दिए गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं. Ronnie is reading. The dog was barking last night. Sonia will be sleeping after lunch. In the above sentences, the verb is reading refers to present time. कि ऊपर sentence में जो verb है is reading वो refer करती है present time को.
The verb was barking refers to past time. जो वर्ब है was barking वो रेफर करती है past time को. The verb will be sleeping refers to future time. जो वर्ब है will be sleeping वो रेफर कर रही है future time को. Right? A tense of a verb which describes an incomplete or ongoing action is called a continuous tense. एक ऐसा टेंस वर्ब का जो दिखाए किसी इनकम्प्लीट एक्शन को या फिर वो एक्शन जो अब भी परफॉर्म हो रहा है विच इज स्टिल ऑनगोइंग इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो वी हैव present continuous tense, past continuous tense and the future continuous tense. Present continuous, this tense shows that the action started in the near past and is still going on. कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखाता है कि जो एक्शन है वो कभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है. दिस टेंस शोज एक्शन विच इज ऑनगोइंग इन सम टाइम ऑफ पास्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूस दिखाता है कि कोई एक्शन था जो कि पास्ट में चल रहा था. राइट? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, दिस टेंस which shows a continuous action which will happen in the future time. ये एक ऐसा एक्शन दिखाता है जो कि आने वाले टाइम में कंटिन्यूसली परफॉर्म होगा. राइट? In present continuous tense is am or are used and ing is added to the word. कि present continuous tense में is am are use होता है और ing verb form के साथ add on किया जाता है. In past continuous tense, was verb are used and ing is added to the verb. Past continuous tense में was verb use किया जाता है और ing verb के साथ add होता है. In future continuous tense, will be or shall be are used and ing is added to the verb. कि फ्यूचर कंटिन्यूस में will be और shall be यूज होते हैं और ing ऐड किया जाता है वर्ब में. राइट? सो नाउ लेट अस गो थ्रू द चार्ट एंड बिलो एंड अंडरस्टैंड. अब जल्दी से इस चार्ट को पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं. सो इट इज नाउन नंबर, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. सिंगुलर में इट इज आई रन, आई एम रनिंग. प्लूरल वी रन, we are running. Singular में he runs, he is running. Plural में you run, you are running. Right? Noun number, simple past tense, simple past continuous tense. Again it is singular. I ran, I was running. Plural, we ran, we were running. Singular, he ran, he was running. Plural, you ran, you were running. Noun number, simple future and simple future continuous tense. Singular, I shall run. Continuous, I shall be running. Plural, we shall run, we shall be running. Singular, he will run, he will be running. Plural, you will run, you will be running. Then we have the topic, that is confusion between nouns and verbs. अब nouns और verbs के बीच में जो confusions हैं उन्हें clear करते हैं. Sometimes we use the same words as nouns as well as verbs. कि कभी कभी हम same words को nouns और verbs दोनों की ही तरह use कर लेते हैं. Example, this painting costed me quite a bit. Noun, she was painting a scenery. यहाँ पर ये एक verb है, right? Notice that the word painting in the first sentence is a noun. कि हमने देखा पहले sentence में जो word painting है वो एक noun है. It is a naming word क्योंकि ये एक naming word है.
whereas the word painting in the second sentence is a verb because it is a doing word. पर वहीं सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ड पेंटिंग है वो एक वर्ब है क्योंकि ये एक डूइंग वर्ड है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.